Namaskar, everyone. A very warm welcome to WSDS 2024 and to the thematic session, Leading Collective Action for Greener Future. So, WSDS is World Sustainable Development Summit. It was instituted in 2001 and it is an annual flagship event organized by the Energy and Resources Institute, which is TERI, which we commonly know. So the summit has a legacy of over 20 decades by making sustainable development a globally shared goal. Over the years, the summit has brought together thought leaders, heads of the states and governments, scholars as well, and corporates, youth groups, etc., from across the world. This event is being hosted by Strategic Communication for Sustainability area under Environment, Education and Awareness Division of TERI. The group, besides other sections of the society, works closely with students and youth by empowering them with sufficient knowledge, skills, attitude, and values to bring about the behavioral change towards sustainability issues. Our children are the future leaders, and it is through guided mentorship they will work victoriously towards the goal of sustainability. The Green School, a TERI and Tata Steel Foundation initiative is definitely a one step in that direction. First launched in 2017, the project is in its 7th year of execution with the objective of providing all-encompassing view to the students on environment sustainability through curriculum linkages, action projects, and capacity building activities. I'll take you to the flow of the event. So we will have introductory remark by Ms. Khushbu Prajapati. She is Manager Education, Tata Steel Foundation. That would be followed by a panel discussion with representatives from different schools in the project. There would be a session on green harmony by Mr. Tawqir Alam, which will then be followed by a panel discussion on environment education. And we will be having conversation on a green tomorrow, and thereafter we'll be concluding the session. So we'll like to invite Ms. Khushbu Prajapati to deliver her introductory remarks. A big round of applause for her. Please welcome her on the dais. Ms. Khushbu Prajapati is a manager at Tata Steel Foundation. She's Master's in Habitat Policy and Practice from Tata Institute of Social Sciences. Her expertise encompasses sustainable development, program evaluation, and fundraising. At Tata Steel Foundation, she oversees a diverse range of projects on education, spanning improvements in government schools, environment education, IT, and English learning. And her education initiatives for street and homeless children are commendable. Her keen ability to monitor ongoing initiatives and develop new projects underscores her commitment to fostering positive changes. She has also worked as a project associate at Center for Environment Education and contributed in raising environmental awareness among school children through engaging initiatives like waste management, energy conservation, and composting. Her passion for corporate social responsibility and sustainable development is reflected in her projects that directly impact education and the environment. Please welcome. Ma'am, you're most welcome. Thank you. Thank you very much, Nitika. Good afternoon to everyone. So Nitika has touched upon few important points about the Green School initiative that is going on in collaboration with Tata Steel Foundation and TERI. In 2015, a landmark decision was taken by around 196 countries at Paris. And it is very famously known as Paris Agreement. And the countries pledged to bring down the temperature below 1.5 degrees. There were lots of different ideas, and every country has to do this, achieve this through different initiatives. One among them is the capacity building.
So taking this lead of capacity building, the Green School initiative idea was conceptualized, and it was initiated in 2017 across. We started with very small numbers of 10 schools, just to understand how do we go ahead and how does this gives us the results. And we started in some of the very interior areas of Jharkhand and Orissa. So I would request to please start with the presentation. To the first slide, go next. Yeah. So we are in 7th year, and from 2017 till now, the initiative has come miles ahead from awareness to education. We started the initiative with some awareness sessions and telling children and teachers about the environment crisis and the environment degradation, the climate crisis that is happening. And slowly, year after year, a lot of initiatives and a lot of activities added on. Children added on. In first year, 2017-18, only 10 schools were with us. In second year, we went ahead. We brought in 20 more schools, and we started working with around more than 7,000 children. And there were 4 themes that have been taken under this initiative, which is water. These are the focus areas: water, energy, biodiversity and forest, and waste. So it was very interesting for us to know that children from these remote areas, they are born and brought up in the places which are full of environmental blessings. There are birds, there's a lot of things to observe around them. In our very initial discussions, we got to know, yes, listen, they do observe, but they were way away from the environmental crisis, that the climate change that's happening, or they were not able to relate those pointers. Phase two also, we focused more on awareness. We started with looking into the gaps into the curriculum, and also initiating some activities like rainwater harvesting or recycling the waste paper. These activities brought the children further closer to the initiative. Phase 3, we moved ahead. We continued with the same number of schools and the children, but the focus also increased or moved towards working with the communities, spreading the learnings, the knowledge into the communities. A lot of awareness campaigns and initiative, Nukkad Nataks, plays and rallies, campaigns were taken up by children themselves. Definitely, they were guided by the teachers and by us to how to go ahead with all these activities. Phase 4 and phase 5, phase 3 basically also saw the effect of COVID. And it was very difficult to reach out to children and teachers during that time, because these are all interior areas in Jharkhand and Odisha. And internet connectivity or phone connectivity was also very poor. But still, a lot of children invested their time in the house, working with their parents or their neighbors, working with the environment, planting trees, making bird nests. So they kept their association continuing with the environment. Moving ahead in next to, the last slide itself. Thank you. Moving ahead in the next 2 years, we basically tried to, now it was time to strengthen these children, the active children, into committees. So we introduced Building Environment Management Committee, which was a group of active children, teachers, even the principal, and some of the community members too. Community members, there can be parents who are of whom the children are there in the schools. These environment management committees, there was a guideline formulated for them, how they would work, what all activities would be done. In last 3-4 years, they have already learned a lot of things. So they were now supposed to implement them within their school system itself. Next year, and this phase, we focused in strengthening these environment management committees, these children. And we also proposed, a thought came up that if you would like to go ahead and
share your knowledge with the other schools, with other school children. Share your knowledge more in the audience, in the community. So in the next phase, we actually increased to 45 number of schools, because the existing schools, they also took up the responsibility to spread this knowledge with other schools. 1920 more schools came up, and there wasn't any role that we played. It was the schools, one school which was already there with us, they moved up to the reached up to the management of the other school, convinced them, and then they just started working on different activities. So we have also categorized these schools in three sections. The new schools which come into the system, they are we identify them as early school. The schools which have been there since 2017, we identify them as experienced schools, because they have got all these lot of knowledge, lot of inputs have gone through, and the teachers are also trained since all these years. And the next phase for these experienced schools is to become as an evolved school. So I'll come on that evolved school. The next session actually covers that. And finally, coming this year, as the presentation also mentions, there are more than 23,000 children who are being covered, who are being influenced through different activities. The school is vibrant with activities like, these sound very small, plantation drive, but there are more than 1,200 saplings planted around the year by the children, by the community. The parents, village people, everyone is coming together in these activities. A lot of awareness campaigns are also continuing till date, with by the children, led by the children, and supported by the community. I would further I'll close my introductory remarks over here, and maybe we'll go ahead with the next session. I'll continue. Okay. So since I am moderating the next session, so I have been told by the MC to please continue. Okay, so this actually makes sense also. So the next session is, it talks about, you can keep the presentation. You can keep the presentation. Okay. Yeah. So since last 2 years, last year and this survey, we are trying to bring in these active environment management committee children into this onto this world platform, to express their experience as well as to present their work at this platform in front of all of you. So this is the second year for these children. Last year some children came, this year some other children are representing. So this session is named as Schools as Center for Change. Why, when I in my introductory remarks, I just mentioned about evolved schools. So the project, the initiative, actually the long-term goal is that there should be such 100 schools in a evolved manner, where the school itself, the children of that school are doing a lot of sustainable practices in all these 4 themes, and they are also mobilizing their nearby communities, and then they are sustaining it on themselves. There's a lot of resource material also which have been developed under this initiative, and all these resource material are shared with the children. Children are learning from doing environment impact reviews, which is a big word, but basically audits and wastewater and energy audits, and to preparing biodiversity, doing biodiversity mapping in their school, in the community, nearby community. A lot of activities these children are doing. They are learning a lot of things. So they will then, the idea is they are on the path. These children who will be presenting over here, these schools are on the path of becoming evolved. They are now will be like a keeper, will be seeing from, will be the backend force, and we'll be helping them to communicate and to work with the other schools and in their own community, and going ahead in other parts of India also, definitely. I would like to invite Miss Nikita Kumari, who is a student from DAV Alkusa School, Alkusa. Please come and have a seat. From Sharia, one by one.
I'd like to invite Miss Risa. I'd also like to invite Miss Ritika. Just check your name. Okay, sir. And next is Mr. Pradhan from Sukinda, basically. And these are our young panelists. Thank you, panelists, to be seated. I would not take much time over here, and I'll request Miss Risa, who comes from Joda, which is a mining-rich, mining-dominant area, which is one of the very remote area in Keonjhar district of Odisha. And she is associated with this program since 2017. And presently she is studying. She came very young. She was a small child at that time, and I remember her at that time. And till date, she has grown so much, and she's in class 11, studying in women's college in Joda itself. रीसा, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ आए और अपनी बात को रखें. थैंक यू मैम. सभी को मेरा नमस्कार. मैं इस ग्रीन स्कूल से में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और हमारा कमिटी में मेरा कमिटी और हम लोग मिलके बहुत सारे काम भी किए हैं. हम लोग बहुत सारे काम किए हैं, और हम लोग 4 पॉइंट के ऊपर ज्यादा काम करते हैं. वो है वाटर, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी और वेस्ट का ऊपर. हम लोग वाटर में पानी को कैसा बचाएं और जितना चाहे उतना यूज करें. तो जब भी हम लोग हाथ धोते हैं तो नल खोल के हाथ धोते हैं तो बहुत पानी वेस्ट हो जाती है. इसीलिए हम लोग एक टिपी टब बनाए ताकि वो टिपी टब में कम पानी से अच्छा तरह से हाथ को धो सके. और हमारा हॉस्टल में एक नल है जहाँ की बच्चों लोग जाके थाली उली धोते हैं तो वो पानी जाके वेस्ट हो जाती है. तो मैंने और हमारा कमेटी ने मिल करके एक छोटा सा पॉन्ड बनाए ताकि वो वेस्ट पानी जाके उस पॉन्ड में स्टोरेज होते हैं, और वो पानी को हम लोग किचन गार्डन में डालते हैं. और नहाने का समय जो कपड़ा धोता है पानी, उसको भी हम लोग किचन गार्डन में रीयूज करते हैं. और इलेक्ट्रिक में भी ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक में पोस्टर मेकिंग किए हैं. बिना कोई काम से रूम में लाइट या फैन चल रहा है, रूम में कोई नहीं है तो लाइट फैन चल रहा है, तो इसको हम लोग जब भी देखते हैं तो जाकर बंद कर देते हैं. और जहां जहां भी स्विच बोर्ड है उसका पास एक एक के स्विच बोर्ड लगा हुआ है ताकि अलग बच्चों ने उसको देख के समझ जाते हैं और लाइट फैन को बंद करके बाहर आते हैं. बायोडाइवर्सिटी में हम लोग बटरफ्लाई गार्डन और सीड बॉल, किचन गार्डन, नेस्ट मेकिंग किए हैं. बटरफ्लाई गार्डन में हम लोग अलग अलग सब फूल का पौधे लगाए हैं, जैसे कि रोज, सनफ्लावर इत्यादि फूल पेड़ लगाए हैं. और फूल फूल के वजह से बहुत सारे अलग अलग सा बटरफ्लाई आते हैं. और सीडबॉल इसीलिए हम लोग बनाते हैं ताकि जीव जंतु और कीड़ा से बचा सके. बॉल का अंदर जो सीड है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सीड बॉल बनाते हैं. और वेस्ट में जितने भी हम लोग का वेस्ट में हम लोग डस्टबिन यूज किए हैं. वो नीला डस्टबिन में हम लोग सूखा कूड़ा डालते हैं, और हरा डस्टबिन में हम लोग गीला कूड़ा डालते हैं. तो जो गीला कूड़ा होते हैं उसको हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं. पहले बार हम लोग कंपोस्ट 4 के 5 kg कंपोस्ट बनाए और पेड़ पौधे में
यूज किए हैं। और जो सूखा कूड़ा होते हैं उसको हम लोग इकट्ठा करके अलग अलग सा डेकोरेट चीज बनाते हैं। और लोगों को अवेयरनेस करवाने के लिए मैंने और हमारा कमेटी ने नुक्कड़ नाटक रैली किए हैं। मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि ग्रीन स्कूल के एक महिला सैनिक बन सकूं और ग्रीन स्कूल का सब कम सीख के अलग बच्चों को अच्छा तरह से सिखा पाऊं। इसका ऊपर हम लोग हमारा आरबीसी का बच्चों को और आडव स्कूल का बच्चों को इस काम को करवा रहे हैं। और इस बार हमारा कॉलेज की प्रिंसिपल से भी बात हुई है कि वाटर और एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी और वेस्ट का ऊपर हम लोग कॉलेज में भी काम करेंगे। हम लोग जहाँ भी जाए तो ग्रीन स्कूल का ऊपर ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे काम करें जो अलग अलग लोग को नहीं कहने से भी वो अपने दिल से इस काम को करे। थैंक यू। Thank you very much, Risa. I would like to mention over here that Risa comes from a Odia speaking background. उसने बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में उसने सारे काम को यहाँ explain किया है. So they have its activities that she has spoken about, and even we were very amazed by knowing about the butterfly garden, and rather we took that picture and we actually showed it to some experts. And it was told to us that it's a national, not national, it's a state butterfly of Maharashtra state. Neha, if I'm correct, right? Okay, so it was interesting to hear activities. There a lot of activities, बहुत सारी activities हुई हैं, जैसा मैंने बोला उन सब चीजों को लेते हुए ये सारी activities हुई हैं. We would अब मैं आगे बढ़ूंगी. I would like to request Nikita and Irtika, both of them, to please come up and share your views and your thoughts. नमस्कार। जैसे कि अभी हमारी दोस्त रीशा ने हम सभी के सामने बताया कि द ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव के अंतर्गत हमने क्या क्या काम किए, वैसे ही अब इसी चीज को आगे ले जाते हुए हम बताना चाहेंगे कि द ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव के अंतर्गत में किए गए इन कामों का क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब हमारे स्कूल के बच्चों ने देखा कि पीने के पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक फिल्टर अपडेट किया जाए स्कूल में। लेकिन मॉडर्न डे फिल्टर बहुत ज्यादा कॉस्टली और ना ही ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली, और तो और आफ्टर यूज वो बहुत ज्यादा वाटर भी वेस्ट करता है। सो दे केम विद द आइडिया कि हम लोग एक मिट्टी के घड़े से बने हुए फिल्टर को अपडेट करते हैं। जी, उन्होंने ट्रेडिशनल वाटर फिल्टर अपडेट किया है। हमें ये नहीं पता था कि हमारे एक कदम को आगे करने से इतने सारे कदम आगे आएंगे। जी, हमारे स्कूल के 7 ब्लॉक के 113 बच्चों ने मिलकर 6 और वाटर फिल्टर इंस्टॉल करने का सोचा है। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम ये काम करेंगे। बात ये नहीं है हम सबने मिलकर ये काम किया, बात ये है कि हमें एक जागरूकता आई, बात ये है कि हमें एक बदलाव आया, और इसी बदलाव की आज के इस जनरेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है। पर सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब हमारे स्कूल के बच्चों ने साथ मिलकर क्लॉथ बैग्स बनाए। जब उन्होंने क्लॉथ बैग बनाए तो उसके बाद उन्होंने बहुत ही खुशी से अपने पेरेंट्स के बाद जाकर इस बात को शेयर किया। इसके बाद पेरेंट्स के अंदर भी एक बदलाव देखने को मिला। बच्चों ने स्कूल में आके हमें ये रिपोर्ट्स दी कि उनके पेरेंट्स ने प्लास्टिक के यूज को बहुत कम कर दिया है, उसके जगह उन्होंने जूट बैग्स और क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल शुरू किया है। इसके साथ साथ उन्होंने प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स की जगह स्टील और बाकी ऑल्टरनेटिव वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। हम सब जानते हैं कि ये कदम बहुत छोटे छोटे हैं, पर वी आर श्योर कि एक दिन यही छोटे छोटे कदम हमें हमारी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। भले ही आज के दौर में हम सब एक टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में रहते हैं, पर फिर भी हमें ये समझना होगा कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है। इन सब कार्यों को करने के बाद हमने राज्यकृत मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ भी हाथ मिलाए। हमने उनसे कई बार बात की और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और हमने भी उन्हें बहुत कुछ समझाया।
शुरू के दिनों में तो काफी दिक्कतें आई, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग बनते गई और हमने देखा कि कुछ बच्चे सामने से आकर हमारे साथ काम करने लगे। हमने बहुत सारे काम साथ में मिलकर किए, जैसे नेस्ट मेकिंग और पेपर रिसाइकलिंग। और इस चीज को देखकर, इस बदलाव को देखकर हमारे दिल में बहुत खुशी हुई। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी और पानी को ज्यादा महत्वपूर्णता नहीं दी है। अगर हम उन लोगों में चेंज ला सके, अगर हम उन लोगों को प्रेरित कर सके, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की चीज होगी। अगर हम ऐसे ही छोटी छोटी जीत को जीतते जाएं, तो तभी आगे जाकर हम बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। Thank you, Nikita and Irtika. ओके सो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनके स्कूल में वो वाटर फिल्ट्रेशन का जो उन्होंने डाला है, मटका फिल्ट्रेशन वाला, इट्स कमेंडेबल. इट हैज बीन चेक्ड बाय आवर टीम, इवन द TERI टीम. Clear water comes at the last matka placed in that filtration thing. And definitely a lot of parents have been motivated. We have spoken to those parents. They are saying that these children have been successful in changing our behavior. So this is why we are presenting the scene of the evolved school. These schools are on their path to become evolved. I would now request Tejeshwar Pradhan, right? Yes, now I have gotten the name right. Please come here and put down your views. Yeah. नमस्कार, मैं सुकिंदा से हूँ। सुकिंदा एक बहुत छोटा जगह है। वहाँ के 10 किलोमीटर दायरे के अंदर तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोग रहते हैं। उनमें से भी ज़्यादातर लोग ट्राइबल्स ही हैं। वहाँ के ज़्यादातर लोगों का गुजारा या तो खेती-बाड़ी करके होता है या फिर माइंस में काम करके होता है। जैसे कि हम लोग जानते होंगे कि दुनिया के 17% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पेड़ों के काटने से होता है और पेड़ की कमी से क्लाइमेट चेंज तो होता ही है, लेकिन वो हमारे बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाता है। इसीलिए सुकिंदा के हम 6 स्कूल के बच्चों ने ये समझा कि अगर हमें सुकिंदा का पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, तो पहले सुकिंदा के लोगों के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक भावना जागरूक करना जरूरी है। इसीलिए हम लोग मिलकर बहुत से ऐसे कम्युनल एक्टिविटीज किए जिससे वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक हो सके। जैसे कि वन महोत्सव के अवसर पर हमने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मिलकर 200 से अधिक पेड़ लगाए। ना ही सिर्फ लगाए, उनको आज तक उनका ख्याल रखा जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। और बायोडाइवर्सिटी डे के अवसर पर हमने एक शोकेस इवेंट किया, जिसके तहत हमने जैव विविधता के बारे में लोगों को जानकारी दी और कैसे उसे सुरक्षित रखना है उस बारे में भी बताया। हमने एक अवेयरनेस रैली भी किया था, जिसके तहत हमने लोगों को कैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, उसको क्यों उसको सुरक्षित रखना जरूरी है, यह सब बताया था। और हमने इसके अलावा हमने अलग अलग जगहों पे नुक्कड़ नाटक करके वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी लोगों को जानकारी दी और उनको हमारी तरफ से हमने पूरा ट्राई किया कि उनको मोटिवेट कर सकें कि वो भी अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ये सब काम करके हमने तकरीबन हजार के आसपास लोगों के साथ संपर्क किया। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जब हम लोग दूसरी बार उनके पास जाते थे, वो हमें हमारी ही बोली गई बातें बताते थे, जो सुनकर हमें बहुत खुशी तो होती ही थी, लेकिन ये काम और आगे करते रहने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलता था। तो और हमारा इरादा भी है कि हम TSF और TERI के साथ मिलकर ऐसे काम आगे भी करते रहें। और हम सुकिंदा के बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा सुकिंदा एक एनवायरमेंट फ्रेंडली लोकेशन बने। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और हमारे वाटर का अटमोस्ट यूज हो और वेस्ट कम से कम जनरेट हो। जितना कम वेस्ट जनरेट होगा उसको भी हम रिसाइकल या रीयूज करने का पूरा ट्राई करें। थैंक यू। Thank you very much to all these young crusaders, should I say,
एनवायरमेंट क्रूसेडर्स, एक्चुअली हमने ग्रीन बडीज नाम रखा है हमारे इनिशिएटिव में. सो द होल थिंग स्टार्टेड विद ग्रीन बडीज 2 years back. They started working with their other peers, and now they are talking about moving in their location more wider and going ahead. I would be nothing less than happy or excited to see the whole area as a environment friendly, जो आप बोल रहे हैं जैसा, या नए नए colleges तक आप बात लेकर के जाओगे. It's commendable pledges that you all have taken at this world platform. Thank you to all the panelists. I may request you can please take your seat there. Thank you. Thank you so much. A big round of applause for our pro-environmentalists for taking charge, bringing about change in their own lives and impacting the society. And thank you, Ms. Khushbu, for wonderfully moderating the session. So we now move on to our next session, which is a green harmony. It will talk about relationship between man and its environment. The session will be moderated by Dr. Neha. Dr. Neha is a senior fellow and area convener of strategic communication for sustainability area in Environment Education and Awareness Division of TERI. She is doctorate in reclaimed municipal wastewater use and water sustainability and has spearheaded impactful initiatives throughout her career. She has a portfolio of over 140 projects, and her expertise encompasses environmental awareness, strategic behavior change, communication, and sustainability. Dr. Neha's accomplishments span from conceptualizing projects to leading them in fostering pro-environmental mindsets, behavioral transformations, and skill enhancements. Her engagements encompass governmental bodies, corporations, multilateral, bilateral organizations, foundations, and educational institutions nationally and internationally. I would like to request Dr. Neha to please come on dais. Welcome. And I'll also like to invite Mr. Taqir Alam, Samvad Fellow 2020, winner of Green Harmony Nurturing Eco-Awareness, a Pan-India campaign. Mr. Alam will enlighten us about impact of birds on lives of one Gujars of alpine meadows of Himalayan ecosystem. A very warm welcome. Let's put our hands together to welcome Mr. Taqir Alam. Over to you, Neha. थैंक यू नितिका. अभी हमने देखा कि लाइक वी ऑल ऑब्जर्व्ड हाउ किड्स आर मेकिंग चेंज, बट कहते हैं ना पतंग उतनी ही ऊंची अच्छी जाती है अगर डोर नीचे बंद ही हो. अगर डोर टूट गई हम थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएंगे बट फिर नीचे जाते हैं. तो उसके लिए अगर डोर नीचे कहाँ बंदी होती है, अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमारे ट्रेडिशनल हमारे वैल्यूज के ऊपर. जो ये सेशन है वो है ग्रीन हार्मनी नर्चरिंग इको अवेयरनेस के ऊपर. ये कैंपेन ग्रीन स्कूल के तहत हमने किया था. उसके अंदर हमने बहुत सारे मतलब लाइक 1 महीने का कैंपेन था. उसके अंदर हमने बच्चों से अपने ट्रेडिशनल नॉलेजेस एंड प्रैक्टिसेस व्हिच दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग एट देयर होम शेयर करने के लिए कहा था. तो ये सेशन उन ट्रेडिशनल नॉलेजेस एंड प्रैक्टिसेस का है. और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं तौकीर आलम. तौकीर आलम आते हैं एक संवाद फेलोशिप से. संवाद फेलोशिप टाटा स्टील फाउंडेशन की एक वेल नोन फेलोशिप है टू कंजर्व एंड प्रमोट इंडिजिनियस कल्चरल प्रैक्टिसेस. ही इज अ संवाद फेलो एंड ऑल्सो एन ऑथर and compiler for the first ever written 4 books from the one Gujar nomadic tribe. He himself is one of the proud वन गुजर nomadic tribe member. इन्होंने 4 जो किताबें लिखी हैं वो है वन गुजरी टू हिंदी डिक्शनरी, folk songs, folk tales and stories, and गुजर riddles and proverbs. So तौकीर, मैं आगे बाकी लोगों का टाइम लेने से पहले मतलब लाइक चाहूंगी कि आप ही क्यों नहीं हम सबसे शेयर करते हैं अपनी एक स्टोरी. तो सभी को नमस्कार. मेरा नाम तौकीर आलम है, जैसा कि मैम ने बताया, और मैं उत्तराखंड के जिला हरिद्वार से हूँ और वन गुज्जर नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करता हूँ.
वन गुज्जर नोमैडिक ट्राइब जो है वो ऐसे अपने भैंसों के साथ घूमता रहता है। समर के महीने में वो अल्पाइन मेडोज पे चला जाता है 4000 मीटर तक, और जब सर्दियां होती है तो शिवालिक हिल्स में होता है। ये पूरा जीवन इनका जो है जंगलों में भैंसों के साथ बीतता है। और जब हम इनके जीवन को देखते हैं, जब हम कम्युनिटी में जाते हैं और उनके जो रीति रिवाज है या उनकी जो जीने की लाइफस्टाइल है, जब उसको देखते हैं तो पूरा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। वो प्रकृति के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के चलता है कि कैसे प्रकृति का इस्तेमाल करना है और कैसे उसको बचा के भी रखना है, संरक्षण भी करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है। तो जैसे जब मैं बता रहा हूँ कि माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन होता है अप्रैल के महीने में। जब अप्रैल के महीने में माइग्रेशन होता है तो उस टाइम पे शिवालिक हिल्स जो होता है उसमें जो घास होती है और जो पत्ती होती है वो खत्म हो रही होती है, सूख रही होती है। उसी टाइम पे एक पक्षी होता है जिसको इंडियन कुक्कू कहते हैं, पपीहा आम भाषा में बोलते हैं। थाईलैंड वगैरह से माइग्रेट करके शिवालिक हिल्स में आता है ब्रीडिंग के लिए, और वो कुक्कू वहां पे आके कॉल करता है। तो अगर मैं दिल्ली या बॉम्बे के किसी व्यक्ति से पूछता हूँ कि ये क्या बोल रहा है, तो वो बोलता है कि अपना नाम बोल रहा है, इंडियन कुक्कू, इंडियन कुक्कू। सो जब मुझे फेलोशिप मिली और कम्युनिटी के बीच में जाने का मौका मिला, और जब मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था ट्रेडिशनल नॉलेज, फोक सॉन्ग, फोक स्टोरी, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग ने बताया कि जब हम माइग्रेशन करते हैं तो तब तक माइग्रेशन नहीं करते जब तक इंडिकेटर नहीं आ जाता है। इंडिकेटर यानी इंडियन कुक्कू। तो इंडियन कुक्कू हमें आके बोलता है लोको तप का मतलब कि लोगों अब धूप होना शुरू हो गई है, शिवालिक हिल्स ड्राई हो रहा है, आप अल्पाइन मेडोज की ओर जाइए। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कम्युनिटी को आके मैसेज देता है कि अब आप चले जाइए भैंसों को लेके, आपका जाने का समय हो चुका है। और जब अल्पाइन मेडोज पे पहुंचती है कम्युनिटी, और अल्पाइन मेडोज पे जब होते हैं लोग, तो अल्पाइन मेडोज में कब मौसम बदल जाए, कब बारिश आ जाए, कब ओलावृष्टि आ जाए, कुछ पता नहीं होता। और जितना भी अल्पाइन मेडोज से काफी ऊंचा होता है, ऊंचाई पे आकाशीय बिजली गिरने का डर होता है। तो वहाँ पे दो तरीके के हैबिटेट है, एकदम बिल्कुल मेडोज है जहाँ पर घास है, और एक ट्री लाइन है जहाँ पर भैंसें घास खाती है। तो जब भैंसें अल्पाइन मेडोज के ऊपर होती है, नंगी एरिया में जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं, और वहां पर जब भैंसें होती है, और एक इंसेक्ट है जिसको सिकाड़ा बोलते हैं, तो सिकाड़ा जब आवाज करता है तो सिकाड़ा की आवाज से कम्युनिटी ये पता करती है कि आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। सिकाड़ा पेड़ के किस ब्रांच पे बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, बहुत टॉप पे बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है, एकदम रोड की ओर आगे गा रहा है, तो उसके गाने से पता चलता है। तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि आज सिकाड़ा काफी ऊपर जाके बोल रहा है, भैंसों को अल्पाइन मेडो से नीचे लाइए ट्री लाइन की ओर, क्योंकि हो सकता है रात को बारिश हो, ओलावृष्टि हो और आकाशीय बिजली गिरे तो भैंसों को नुकसान हो सकता है। तो एक सिकाड़ा बता रहा है कि मूव हो जाइए, आज ओलावृष्टि हो सकती है या फिर आकाशीय बिजली आपकी भैंसों पर गिर सकती है। तो ये इतना गहरा संबंध है प्रकृति के साथ लोगों का। और इस तरीके से बहुत सारी स्टोरियां हैं, मतलब जो कम्युनिटी जिस तरीके से प्रकृति के साथ जीती है, एक पेड़ को कैसे काटना, एक पेड़ की लॉपिंग किस तरीके से करनी, वो सब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो जानकारी है। जब हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, है ना, तो उस समय में जब मैं फील्ड में था तो सोच रहा था, लोगों से बोलता था कि भाई कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, कब कहाँ जाना है, क्या करना है, तो कैसे ये सब करते हो। तो बहुत सारे प्रकृति के साथ मिलके जो नॉलेज है, जो सैकड़ों हजारों सालों से उन्होंने सीखा है, उसी के बेस पे वो चलते हैं। तो अगर आप बहुत पहले जाएं, एक राजपूताना अकाल हुआ था 1869 के आसपास, तो ये अगर उस समय राजपूतों के पास ये नॉलेज नहीं होता कि हमको खेजड़ी की फली खा के हम सरवाइव कर सकते हैं, तो कम्युनिटी तो खत्म हो गई होती। वो तो 1869 की बात है, लेकिन मैं जस्ट कोविड के टाइम की बात करता हूँ। कोविड के टाइम पे मार्च में कोविड हुआ, और एंड ऑफ मार्च और स्टार्टिंग अप्रैल में कम्युनिटी वन गुजर माइग्रेट करना शुरू कर देती है। तो माइग्रेट कुछ लोग कर चुके थे और कुछ लोग ऑलमोस्ट अल्पाइन मेडोज पे पहुंच गए थे। एकदम से लॉकडाउन हुआ, और अल्पाइन मेडोज मतलब 4000 मीटर तक अगर आपको किसी ग्रोसरी की दुकान पे भी आना तो 20-22 किलोमीटर चल के आना है, और लॉकडाउन है तो आपके लिए दुकानें भी खुली नहीं है। तो उस समय में कम्युनिटी का पूरा जो सर्वाइव हुआ वो फॉरेस्ट से हुआ, और कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा
जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने पूछा कि एकदम बर्फाने इलाके में होते हैं और चाय पीने का बड़ा शौक है, शौक की जरूरत ही है, तो कैसे सरवाइव किया, बाकी साग सब्जियां तो अपने लिए है। उन्होंने बोला हमें कोई समस्या नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ है जिसको लोकल में बर्मी बुलाते हैं, अगर आप जानते हो, टेक्सास बकाटा करके एक पेड़ है, अल्पाइन मेडोज पे होता है, तो उसकी शाल से हमने चाय पत्ती का यूज किया और बहुत मजे से जिए हैं। आज अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए या हमें उस और नहीं बढ़ना चाहिए, पर आज जो डेवलप्ड लोग हैं वो अगर अल्पाइन मेडोज पे होते कोविड के टाइम पे और उनको सरवाइव करना आता तो 10 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। बहुत बड़े मजे से लोग जिए हैं, और यही हमें प्रेरित करता है कि हमें थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। अब हमारे रूट कहाँ हैं, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पर जो जहाँ पे रूट हैं वो हमारी उनको छोड़ते जा रहे हैं, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू। धन्यवाद टॉपी। आपको हमने एक किस्सा सुनाया है। आप सोचिए, जब हमें 100 से ज्यादा ऐसी एंट्रीज मिली, वो भी तब जब हमने सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले अनाउंस किया था। टू बी ऑनेस्ट, थोड़े से डरे हुए थे कि एंट्रीज आएंगी या नहीं आएंगी, बट 1 महीने के अंतराल हमें 100 से ज्यादा एंट्रीज आई, और सारी ऐसी कहानियों से भरी हुई। It was a challenging task for the screening committee. We screened down to 20. They were judged, and I'm so honored. डॉक्टर प्रणब ज्योति पाटर, जो कि हमारी ज्यूरी कमेटी में से एक थे, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी नहीं जुड़ पाए हैं, पर थैंक यू प्रणब। आई एम श्योर यू हैड अ टफ टाइम स्क्रीनिंग, एंड वी हैव शॉर्टलिस्टेड 10 ग्रीन हार्मनी बेस्ट स्टोरीज, जिनके नाम हमने यहाँ डिस्प्ले करे हैं। उन्होंने क्या स्टोरीज दी थी, और वी आर हैप्पी हमें उनमें से कुछ हमारे साथ जुड़ पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि सब आपको ज्यादा नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि टाइम पॉसिटी है। खुशबू मुझे ऑलरेडी घड़ी दिखा रही हैं, तो इसलिए सिर्फ मैं 2 बेस्ट एंट्रीज में से रिक्वेस्ट करूंगी। आई होप चैताली आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो प्लीज यस मैम, आई एम अवेलेबल। तो चैताली, आप 1 मिनट के अंदर अपनी शॉर्ट स्टोरी बताएंगी। आप क्या कर रही हैं, कैसे आप ट्रेडिशनल नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रही हैं। ओवर टू यू चैताली। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड रिकॉग्निशन। मैम, मैंने 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे। वन थी इको फ्रेंडली आइडल मेकिंग। जो गणपति फेस्टिवल रहता है तभी मैंने इको फ्रेंडली आइडल्स बनाए थे। वो सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया था। और एक इनिशिएटिव था जो था कि दिवाली सेलिब्रेशन था। वो इको कॉन्शियस वे से मैंने सेलिब्रेट किया था, जिसमें मैंने रंगोली बनाई थी, विच इज ऑफ इवन जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से थी। फिर लैंटर्न बनाया था, जो कि डे टाइम लैंटर्न जो एक बर्ड फीडर के साइड से यूज होता था, हो सकता है, और नाइट टाइम एज अ लैंटर्न। फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से दिया बनाए थे। ऐसे 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए मैंने। ये सब अपने ट्रेडिशन के लिए ह्यूज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दे सकते हैं। ऐसे 2 इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किए। थैंक यू चैताली, थैंक यू। और थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। हमें ये जो एंट्रीज आई थी पूरे देश भर में से, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताने के लिए। हमारे पास एंट्री सबसे छोटा, मतलब जो एज ग्रुप से स्टार्ट हुई थी, वो थी 9 साल। And we got entries like from the people from the age group of 60 plus also. So varied age group, lot of entries, and the best entries will be acknowledged under this campaign. So through this particular session, we want to just give a message that we need to be grounded and rooted to our tradition and values. Thank you so much. Thank you, Dr. Neha, and congratulations to all the participants and winners of Green Harmony. A big round of applause for everyone. Thank you.
So the next session will be a panel discussion on environment education. The discussion will try to diverge in importance of incorporating environmental education into school curricula, as has also been stated in National Education Policy. The session will be moderated by Ms. Khushbu Prajapati. Please, ma'am, on the dais. And I would also like to invite panelist Ms. Smita Agrawal, Head of Education, Tata Steel Foundation. Ma'am will request you to please join us on the dais. Please join your hands together to welcome ma'am. Our next panelist is Mr. Vishesh Gupta, Chairperson, Bharat Soka Gakkai. Welcome, sir. Dr. C.V. Shimre, Assistant Professor, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT. She hasn't come. Sorry, apologies. Ms. Padmini, GB, Loyola School, Jajpur. Our next panelist is Mr. Vinod Kumar Tiwari, Tata Davis School, Jamadoba. Over to you, Ms. Khushbu. Thank you very much. So as mentioned, this session will be focusing on. Hello. I hope I'm audible now. Okay, I would like to introduce everyone with the panelists over here. Ms. Smita Agarwal, she heads the education vertical in Tata Steel Foundation. She has big experience in the field of education and specifically working in the line of learning and enhancing education with children. She has her commitment to advancing education and community development. In her capacity as head education at Tata Steel, Smita spearheads transformative initiatives that bridge educational gaps and brings about positive change. Her leadership and dedication has significantly impacted Jharkhand and Orissa, and where she is based. Prior to her role in Tata Steel, Smita's impact extended through key positions as Director of Education at American Indian Foundation and her tenure as Chief Consultant for Pedagogical Improvement at the District Primary Education Project with Government of India. Warm welcome to Smita. In the panel, we also have Mr. Vishesh Gupta, who is Chairperson Bharat Soka Gakkai. He heads the Indian affiliate of SGI Bharat Soka Gakkai. I'm sorry. With its headquarters in New Delhi, BSG has its membership spread over 600 towns and cities across India. The members of BSG hail from all walks of life. They are engaged in their human revolution, believing that a fundamental change in a single individual can significantly transform society. With a determination and passion for realizing lasting global peace, Vishesh has taken several steps to promote these ideas by strengthening the role of educators, working to promote environmental protection and sustainability, and encouraging the youth to play a critical role in their communities. He has also called for the promotion of arts and culture exchange to promote the shared humanity that all of us possess. Welcome to Vishesh, sir, too. And with in the panel, we also have Padmini ma'am and Tiwari sir, who come from two very remote places, Jajpur and Jharia. I would request everyone to do a Google of all these places. You will get to know. And moving ahead in the session. Recently I was going through an article and it says that CBSE is trying to increase the number of subjects in class 10 board exam and even in 12th. So from 5 it would become 10 subjects, and one of those subjects would be environment education.
There are a lot of discussion on this environment education word. We have been talking since we started environment education. Why is it important and what do we understand with environment education? हमने बहुत सारे इनिशिएटिव सुने, बच्चों का काम सुना, हमने लोकल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस के बारे में सुना. So two points and few more we will be trying to cover in this session. The importance of environment education and integrating indigenous knowledge into the main curriculum. So I would first request Smita to please put down her views on why should we see environment education as an important or the need of the hour, and how does she see it to be taken ahead in the Indian education system? Smita. हिंदी में बोले कि अंग्रेजी में? बच्चे बैठे हैं ज्यादातर. मिली जुली आवाज आ रही है बिना माइक के? अच्छा, तो मैं आपको दो चीजें पहले थोड़ा सा बताना चाह रही थी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और जैसे कि तौकीर ने बताया, बच्चों ने बताया कि आप किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के प्रति. तो और हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़े ग्लोबल फिनोमेना की, और हम बात कर रहे हैं कि अब सिर्फ शौकिया या हॉबी की तरह से इसको नहीं देखना है, इसको एक्चुअली स्कूल के करिकुलम में लेकर के आना है. उसके इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं इस इशू के, क्लाइमेट चेंज के, कि उसको किस तरह से समेटा जाएगा करिकुलम में, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और कैसे उसको पढ़ाया जाएगा. मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रही थी कुछ एग्जाम्पल्स की, बड़े स्केल पे, ग्लोबल लेवल पे कैसा दिखता है ये क्लाइमेट चेंज, और जो चीजें हम सोचते हैं कि ये होने से ये हो जाएगा, उस तरह से वो नहीं होता है. चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. बाल्टिक सी, ये यूरोप में अटलांटिक से जुड़ता हुआ एक छोटा सा हिस्सा. नक्शे पे देखिएगा, मैप समझना बहुत जरूरी है सारे बच्चों को. ग्लोबल पूरा आपको नक्शा जरूर देखना चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री कहाँ, ओशंस क्या है. तो इसको अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक से इधर से जुड़ता हुआ एक छोटा सा बाल्टिक ओशन का हिस्सा आता है, जिसके चारों तरफ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं. पूरी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, रशिया है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स इसके बाल्टिक सी में जाते हैं. ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स है. अब उससे क्या, बहुत सारी चीजें बाल्टिक सी में हो रही हैं उसके कारण. एक चीज ये हो रही है कि उसके अंदर एक मछली होती है, इसको हेरिंग बोलते हैं. वो हेरिंग पूरी तरह खत्म होती जा रही है, और जब ये होता है कि कोई मछली खत्म होती जा रही है, तो फिर सरकारें बोलती हैं इसकी फिशिंग बंद करो. वो खाई जाती है, बहुत शौक से लोग खाते हैं. कई कंट्रीज के बहुत पुराने कल्चर से हेरिंग उनके खाने का हिस्सा है. अब गवर्नमेंट बोलती है कि हेरिंग की फिशिंग बंद करो. अब अगर हेरिंग की आप फिशिंग बंद करते हैं तो क्या होता है कि वो फिश का नंबर खूब बढ़ता जाता है, और वो नंबर इतना बढ़ जाता है उस फिश का कि समुद्र में खाना तो उतना ही है, लेकिन फिश का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो वो खा नहीं पाती पूरा. तो उनका साइज धीरे धीरे छोटे होते जा रहा है उस फिश का. तो आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि हम एक ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स है. दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि ये बाल्टिक सी की सैलिनिटी, समुद्र का पानी तो नमकीन होता है ना, बारिश ज्यादा हो रही है. बारिश ज्यादा होने से पानी बढ़ रहा है, रेन वाटर फ्रेश होता है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, सलाइन होता है, सैलिनिटी घट रही है पानी की, और ये सारे पोल्यूटेंट्स के कारण और बहुत सी चेंजेस हो रही हैं. तो उसके कारण अटलांटिक से जो पानी आता था वो कम हो रहा है. बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, पर और उसके कारण ये समुंदर नहीं रह के पॉन्ड या तालाब जैसा बनते जा रहा है. इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज. और ये सारी चीजें मिलजुल के वहाँ की जो फिश है, एक बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मछली को पकड़ना बंद कर दो, तो वो मछली का नंबर बढ़ता जाएगा, और वो नंबर बढ़ता जाएगा तो खाना उसको कम मिलेगा,
मछली को। तो ये सारी जो एक बड़ी मछली होती है वो पूरी तरह खत्म हो गई, जो छोटी मछली को खाती थी कॉड करके मछली है। तो मतलब इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें एक दूसरे पे असर डालती हैं कि सिंपल डिसीजंस की मछली पकड़ना बंद कर दो इज नॉट अ सोल्यूशन, इट क्रिएट्स अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एक तो ये मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाह रही थी। दूसरा, हम जो रोज चीजें करते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, Amazon, ठीक है, हमने कोई ड्रेस मंगाया, अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर दिया, साइज फिट नहीं आया रिटर्न कर दिया, जूता लिया रिटर्न कर दिया। इसका पता है क्या रिजल्ट हो रहा है दुनिया में? इसको फास्ट फैशन जिसे बोलते हैं। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है चिली, आप जानते होंगे, बहुत पतली सी कोस्टलाइन के अलॉन्ग एक लंबी सी, चिली मतलब वो हरी मिर्च की तरह सी लंबी सी पतली सी कंट्री है। उसमें एक डेजर्ट है, आटकामा डेजर्ट। उस डेजर्ट में ये सारी जो ये जो चीजें रिटर्न की जाती हैं अमेजोन पे, ये चीजें बहुत सारी यूज ही नहीं हो पाती हैं, ये सब बेकार हो जाती हैं। ड्रेसेस जो खरीद के रिटर्न कर देते हैं ना, वो और जगह नहीं बिकती हैं, वो जाके लैंडफिल्स में जाती हैं। लैंडफिल्स आप जानते हैं? तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी लैंडफिल्स आटाकामा डेजर्ट में बन गई हैं सिर्फ इस फास्ट फैशन की, कि वो स्पेस से दिख रही है वो लैंडफिल, 65 फीट हाई, माइल्स लॉन्ग लैंडफिल सिर्फ फैशन के कपड़ों की, जो हम अमेजोन पे और इन सारी ऑनलाइन साइट्स पे रिटर्न करते जाते हैं। तो वो स्पेस से नजर आ रही है। नेशनल ज्योग्राफिक में इसके बारे में आया है, बहुत जगह इसके बारे में आया है कि हम सोचते भी नहीं है कि हमने कोई चीज खरीदी रिटर्न कर दी, या ये खरीदा वो खरीदा, 2-4 बार पहना फेंका, उसका क्या होता है उन चीजों का। वो सारी चीजें इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो मतलब इन सब चीजों के बारे में अगर हमको पढ़ना है, हमको क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ करना है, तो हमको एक लोकल लेवल पे जानना है। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि हम पॉलिथीन का यूज कम हो गया है, तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके गांव में पॉलिथीन का यूज 0 हो जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन इन चीजों के बारे में जानना कि बिल्कुल लोकल से लोकल और बड़े स्केल पे ग्लोब में क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसको भी हमको जानना जरूरी है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें रोज के एक्शन ऐसे करते हैं जिसका हमको पता ही नहीं होता कि रिजल्ट कहाँ तक पहुंच रहा है। तो इन एनी केस ये तो कुछ चीजें थी। अब बहुत सारे और चीजें जो हमको कैसे, मतलब ये चीजें हम स्कूल बुक्स में लेकर के आएंगे, इसके ऊपर बहुत सोचना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज को अगर हमें देखना है तो हमको डिफरेंट हैबिटेट्स में देखना पड़ेगा कि डेजर्ट में क्या हो रहा है, ओशंस में क्या हो रहा है, माउंटेन्स या उसमें क्या हो रहा है, फॉरेस्ट में क्या हो रहा है। अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं। तो डिफरेंट हैबिटेट्स में क्या हो रहा है, और जो इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज जो हैं, तो आपने बताया ये जो जिन पे टेरी और ग्रीन स्कूल और TSF मिलके काम कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट, क्या क्या है बताइए? बायोडाइवर्सिटी और वाटर कंजर्वेशन, 4 तो बहुत मेजर एरियाज है ना, इन पे काम हो रहा है। तो अब ये इश्यूज हैं, ये हैबिटेट्स हैं कि मतलब इंडिया को ही देख लीजिए, कहीं ग्रासलैंड्स हैं, कच्छ में अलग इशू है, तमिलनाडु के कोस्ट लाइन पे अलग इशू है, लद्दाख में इनकी पॉपुलेशन गिर रही है याक की, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो याक नहीं जी पा रहे हैं उस। तो मतलब हर जगह इतने सारे, तो इन सब चीज़ों को हमको कैप्चर करना पड़ेगा, जो किसी ना किसी फॉर्म में हमको इनको स्कूल बुक्स में लाना पड़ेगा। तो हमको बड़े स्केल पे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तौकीर ने वहाँ का बताया, पहाड़ों का। हाँ, या सो बेसिकली आई एम जस्ट अबाउट टू एंड ओनली। एक और एस्पेक्ट हमें इसका देखना पड़ेगा कि जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इम्पावरिश्ड कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, मिडिल क्लास पे क्या असर पड़ रहा है, और बहुत रिच लोगों पर मतलब असर क्या पड़ रहा है, नहीं मतलब हर का रोल क्या है इस चीज में। जो सुपर रिच है उनका उनका जो बिहेवियर्स और उनकी जो लाइफस्टाइल्स हैं, उनसे एक तो ये हो गए कम्युनिटीज के लोग, पुअर, मिडिल क्लास और रिच। दूसरा, अगर हम ग्लोब को देखें तो आजकल 2 टर्म्स यूज की जाती हैं, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ जानते हैं क्या है?
जो बहुत बड़ी रिच कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, और ग्लोबल साउथ अफ्रीका, ये सारे देश, नीचे वाले जो देश हैं जहाँ पे पॉवर्टी है और अंडर डेवलपमेंट है, तो इनके बीच में बहुत डिबेट चल रही है। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज कह रही हमने तो नहीं क्रिएट किया ये सब, आप लोगों ने क्रिएट किया, और आप हमारे ऊपर इसका प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। Apologies for I- intervening. yeah. I'm so sorry. We are I know, I a little know. behind schedule. Yes. So I will just end with this. So ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। इन पे यंग लोग कह रहे हैं कि हमारी 20 साल बाद फ्यूचर क्या होगी, एल्डरली लोग कह रहे हैं कि हमने तो पूरी लाइफ अपनी जी ली, हम पे क्यों प्रेशर। तो ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड इशू है, तो हमें इसको धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा, और कैसे इसको हम स्कूल में लाएंगे, इसको भी हमको धीरे धीरे देखना पड़ेगा। थैंक यू, आई एम सो सॉरी। Fine. We in fact would love to hear more and more, but because of time, we have to restrict. Yes, yes. Yes. We are we are, as a teacher from a green school, we are working from 2017 continuously, and we succeeded in a school level and our student level, and somewhat it is not about the 100% of succeed. We are succeeded in nearly 30 to 40% of succeed. So what's the lag behind? We want to know here about the human being, what the parents are thinking. Is it correct, or we are doing whatever it's a activity, or what the thing? So we are not getting that 100% of full achievement. So Okay, Padmini ma'am, what I understand is this is a kind of question. Vishesh sir, I would request you to kindly throw some light on human behavior. Basically, we are trying to reach out to the community, so that's what the struggle that ma'am is talking about. In the school, also they have to struggle with other teachers, other administration, even in the community. So yes, sir. Yeah, thank you very much and good afternoon everyone. आपका जो प्रश्न है बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब हम सस्टेनेबिलिटी ड्राइव या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो पहला स्टम्बलिंग ब्लॉक आता है वो यही आता है कि कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, और जो लोग इसको बहुत एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं उनको वो डिस्करेज करते हैं। सो अभी जो वॉरियर्स हैं, 4 बच्चे जिन्होंने बताया कि वो क्या क्या कर रहे हैं अपने जिले में, schools में, I think one word they use was baby steps, that they are making baby steps. So ये जो baby steps हैं ये बहुत important है, क्योंकि किसी भी sustainability drive में जो पहला हमारा step है वो है learn, awareness create करना, जागरूकता create करना। अगर हम जागरूकता क्रिएट करेंगे लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में, तो कुछ ना कुछ वो कुछ टाइम बाद जरूर एक्शन लेंगे। और दूसरी चीज मैं सोचता हूँ कि बच्चों का सुनने के बाद, दैट चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अगर जो बच्चे हैं अगर वो स्टेप ले रहे हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं डिफॉल्ट वो स्टेप्स लेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे बच्चे इतना कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अब जैसे आपने प्लास्टिक बैग्स वर्सेस क्लॉथ बैग्स की बात करी, तो आपके पेरेंट्स जो है वो भी क्लॉथ बैग यूज करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो घरों में वो भी जो है बिजली और पानी को जो है किफायतशारी के रूप में ही प्रयोग करेंगे। तो हमें जो है इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए कि हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया और उसमें हर एक का हमें पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा। बट आई फील कि बेबी स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनके जरिए हम बहुत लोगों को रीच कर सकते हैं। और तभी जो है ये जो स्कूल्स हैं जहाँ पे हम ग्रीन करिकुलम की बात कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ चेंज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन सकते हैं। तो इस जंग में, इफ आई कैन यूज द वर्ड जंग, इसमें टाइम लगेगा, ये एकदम होने वाला नहीं है, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। बिगनिंग इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव, वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आई थिंक जो फर्स्ट स्टेप लेगा वो ही जीतेगा, ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। Good afternoon. Good afternoon to everyone. We have
started our journey with Tata Steel TERI in 2017, and we have done a lot of work regarding this, such as plantation and under biodiversity and all these things. Sir, प्रकृति में हम रह रहे हैं, प्रकृति का दोहन हम कर रहे हैं. हमें इस बात की जानकारी थे, सर ने कहा कि अभी हम लोग शुरुआत किए हैं. मेरा मानना है कि हम शुरुआत अभी नहीं किए, बल्कि बहुत पुराने समय से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन हम लोग सही सोच नहीं पाए. जैसे कि अगर महाकवि कालिदास के बारे में अगर हम बात करें, तो उनके बारे में कहा जाता है कि जिस पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे, वो उसी पेड़ को काट रहे थे. उनका क्लियर कट मैसेज था कि हम मनुष्य जिस प्रकृति में पैदा हुए, उस प्रकृति को हम दोहन कर रहे हैं, उसी का विनाश कर रहे हैं, और उसी चीज को वो दर्शा रहे थे पेड़ पर बैठ करके कि देखो हम उसका नुकसान कर रहे हैं, अगर ये प्रकृति नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे. तो मेरा ये मानना है कि सर कि हम लोग इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अगर इसको किस तरह से इस मूवमेंट को हम लोग स्कूल लेवल पर एक लार्ज स्केल पर इसको इम्प्लीमेंट कर सके, सो दैट कि आने वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट रहे और सभी लोग इसके प्रति जागरूक हों. जैसा मैडम ने कहा कि कुछ लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है, तो स्कूल लेवल पर अगर इस करिकुलम में इसको शामिल कर लिया जाएगा तो वो सारे लोग इससे अवेयर हो जाएंगे. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. स्कूल लेवल पे इसको ऊपर लेके जाना बहुत जरूरी है. मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा आपके साथ जो हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं. हमने एक एग्जीबिशन बनाई है 25 पैनल्स की, जिसका नाम है SOHA सोहा, सीड्स ऑफ होप एंड एक्शन. उसका फुल फॉर्म ये है. और उस एग्जीबिशन के जरिए हम क्या अचीव करना चाहते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके हम ये एग्जीबिशन दिखाते हैं, और इस एग्जीबिशन के जरिए वी वांट टू सो द सीड्स ऑफ होप इन द माइंड्स एंड द हार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि वो एक्शन ले सकें अपनी डे टू डे लाइफ में सस्टेनेबिलिटी के लिए. तो इस एग्जीबिशन में क्या है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्शन लिए, और एक इंसान ने एक्शन लिया और वो कैसे एक रिपल इफेक्ट बना सोसाइटी के अंदर, कैसे दूसरों लोगों को उन्होंने एनकरेज किया अपने एक पहले स्टेप से, वो एग्जाम्पल्स हैं. तो इन एग्जीबिशन और पैनल्स को देखने के बाद बच्चों के मन में आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी एक स्टेप ले सकता हूं, मैं भी एक स्टेप ले सकती हूँ. इस टाइप की जब उनमें कॉन्फिडेंस आता है तो वो डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं, जिससे एक ये मूवमेंट बन जाता है. अब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा. हमने खुर्द एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे एक स्कूल में हमने ये एग्जीबिशन की. तो वहां पे एक छात्रा है जिसका नाम है जेविका. सो उसने वर्मी कंपोस्टिंग को जो है अपने घर में उसने अपने पेरेंट्स से बात करी कि भाई मैंने वर्मी कंपोस्टिंग सीखा है इस एग्जीबिशन के जरिए, तो हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो उसके पेरेंट्स ने कहा जरूर करेंगे. उन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग शुरू करी और वो उनकी लाइवलीहुड बनी. उसके बाद जो उनके आसपास के घर थे उन्होंने भी वर्मी कंपोस्टिंग का काम शुरू किया. तो स्कूल ने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इनिशिएटिव है जीविका कुशवाहा के नाम पे इस इनिशिएटिव का नाम रख दिया. तो एक स्टूडेंट ने एग्जीबिशन देख के उसको जो प्रोत्साहन मिला उसकी बेसिस पे एक उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया. इसी तरह से लास्ट ईयर हमने दिल्ली NCR रीजन में प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव का अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने करीब 27,000 kg से ज्यादा प्लास्टिक जो है इकट्ठा किया, और इसमें काफी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि कैंपेन तो 10 दिन की थी, 10 दिन के बाद ये कैंपेन खत्म हो गई, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि हमें जो है प्लास्टिक कम से कम यूज करना चाहिए घर में. और इसकी वजह से वो हमें फोन करते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि हमारे पास इतने केजीज प्लास्टिक है, हम इसको रिसाइकलिंग के लिए कहाँ दें. तो नाउ भी गाइड देम कि भाई ये रिसाइकलिंग कंपनीज हैं, आप यहाँ पे इनको डिलीवर कर सकते हैं, या हम उनको बोलेंगे वो आपके घर से आके कलेक्ट कर लेंगे. तो ये जो स्टेप्स हैं, पहला जैसे मैंने बताया था लर्न, दूसरा है रिफ्लेक्ट कि अगर मैंने कुछ सीखा लेकिन मैं उसमें क्या कर रहा हूं, और तीसरा स्टेप है एक्शन. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्शन. अगर हम एक्शन लेंगे जो जैसा आप 4 लोगों ने बताया शुरू में, तो ये एक सस्टेनेबल ह्यूमन बिहेवियर बन जाता है. फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अपने आप ही धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है, और यही हम लोगों को अचीव करना है. क्योंकि जो सरकारें हैं उन्होंने रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं,
कंपनीज के पास CSR फंड्स हैं, वो अपने फंड से कुछ एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके और CSR फंड को यूज कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें अपने डेली लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना है। हमें खुद स्टेप्स लेने हैं कि हम इस मदर अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, और उसके लिए सस्टेनेबल ह्यूमन बिहेवियर इज द की। तो आई थिंक आप लोग जो स्कूल में कर रहे हैं बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। रियली डीप ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन फॉर योर एफर्ट्स, क्योंकि इसी से बच्चों के जरिए से ही हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। Thank you very much, sir. Thank you very much to the panelists. It was a very insightful session actually. Smita ने बहुत सारे important elements बताए, and I would really want to mention over here that ये हमें स्कूल में ये चीजें नहीं मिलती ना पढ़ने को स्कूल बुक में। ये आना है ना स्कूल बुक में, ताकि सब जानेंगे इन चीजों को, इसको समझने के लिए कि कोरल रीफ्स में क्या हो रहा है या अलग अलग हैबिटेट्स में क्या हो रहा है, उसके लिए you will have to Google, and one person has to have that intention to understand, to want to know about that. But if it is there in the curriculum, it will be quite helpful to spread this understanding across everyone, and a lot of number of people, young generation, will be more aware of all these issues. I would also extend my thanks to Vishesh sir. Very informative. It's very it has been आपने जो बताया प्लास्टिक कलेक्शन को लेकर के, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं प्लास्टिक कनेक्शन। एक हमारा यूनिट है जोड़ा, वहां पर सारे स्कूल्स ने मिलकर के प्लास्टिक कनेक्शन का बेड़ा उठाया है। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ डू वी गो अहेड इन those steps. Right. Not taking further any more time, and we are running late by 15 minutes. I would now request Neha to please coordinate the next session. I request the panelists to please take the seat down. Thank you so much, Khushbu. Thank you, Smita, Vishesh sir, Vinod sir, and Padmini ma'am. Thank you so much. Now we come to the last panel of this today's thematic track, which is Conversation on a Greener Tomorrow. I'm honored that we have been joined by two dignitaries. First is Mr. Saurav Roy. I hope, sir, you are there online. Hi, Neha. Hi, sir. Good afternoon. Saurabh Roy is a Chief Executive Officer at the Tata Steel Foundation and the Chief of Corporate Social Responsibility for Tata Steel, which is one of the oldest, deepest, and the most meaningful social impact portfolios in the country, working across more than 200 blocks of India, directly reaching out to more than 3 million lives a year and implementing large-scale changes models on core development challenges of the least reached and most silent. Sir has been with the Tata for 16 years now and part of the Tata Administrative Services, the flagship leadership program of the group. He started with the group in the domain of corporate finances and subsequently anchored the sustainability strategy work of the Tata Sustainability Group to integrate social and environmental aspects within the business model of several Tata companies. He has been responsible for setting up disaster response framework for the Tata Group while managing post-disaster relief and long-term rehabilitation program in Uttarakhand, Assam, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Nepal, and other regions within and outside India. He has also worked with the Grameen Bank, Bangladesh, and other organizations in the Indian development sector before joining the Tata Group, and has a fundamental belief that opportunities for the most marginalized is good for everyone. Saurav sir holds a postgraduate diploma in management from IIM Ahmedabad in 2007 and MA in business law.
He loves playing any sports, understanding the history of cinema, amazing knowledge. So I've been able to discuss a couple of times, and tracking and reading a good book in the leisure time. And also we have been joined by Miss P. and Vasanti. She has her PhD in media studies from JNU and has double master's degree in psychology and management. Currently Director General for Center for Media Studies. She specializes in strategy development, designing, researching, and evaluating development programs, communication initiatives. She advises studies and writes on the communication, media, and regulatory issues, mass and new media trends, and consumption patterns, and strategies for development programs, social issues in popular media, and many, many, many more. Conversation, gender, and children are the three areas of her concern and passion. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for joining us. So we started the event at 2:00, and throughout the previous session, we observed about the commendable initiative undertaken by the students, not only at individual, but also at school and community levels, discussed about the significance of traditional knowledge and practices. Additionally, we explored the efforts made by the educators to seamlessly integrate environment education into their regular teaching learning practices, aligning with the principles outlined in the National Education Policy of 2020. With all this, we are normally left with a question that always persists in my mind. What additional measures can be taken to enhance the knowledge and capacity so as to we can actively engage our youth in shaping a greener tomorrow? So in this session, I have a privilege to be joined by two distinguished global leaders, and I will request them to share their expertise and their thoughts that how we can involve youth in environmental initiatives and leverage their potential to contribute to a sustainable and environmentally conscious future. So, sir, would like to start with you first. So, Neha, thank you. Vasanti ji, a privilege to be on the same panel with you. And my colleagues, distinguished guests, बच्चे अगर आप if you're there, सबको good afternoon. A बहुत complicated question है Neha. It's a very complicated question. I don't know where to start, where to finish. But a lot of us, and I speak on behalf of the entire foundation team, many of them, who are there, who are not, and even others, the more we work in different parts of the country with different communities in different contexts, अलग-अलग लोगों से जब हम के साथ काम करते हैं, we sometimes it's a stark reminder of how far away we have come from things that can be fundamentally simple. And today it's basically complicated, and then we are trying to simplify it again. That's essentially what's going on. But without romanticizing it, I think दो तीन चीजें हैं. If we अगर ecological balance की हम लोग बात करें, या whatever phrase we might want to use, ultimately there's an understanding, even within companies, even within this thing, a lot of us, we use the word sustainability, but I think we sometimes tend to forget to pause and reflect that we're not talking about, we're not talking about the planet's sustainability. We're talking about our sustainability on the planet, right? So I think that's a bit of an attitudinal shift. Sorry. So two, three points on this. पहला, बहुत सारा जो हमको knowledge हमको दिखता है, जो है, which vests in generations, which is vested because there's a lot of lived experience, there's a lot of lived wisdom. वो ऐसे form या format में आता है, which doesn't fit our conventional tools, conventional understanding into say a PowerPoint or a Microsoft Excel or conventional tools. तो ये जो पर वो अगर कहीं चला गया, अब हम उसको ट्रेडिशनल नाम दें या एम्बेडेड नॉलेज नाम दें या जस्ट वी कॉल इट नो हाउ,
if we reduce that, if we become a little reductive in pursuing that and try and fit our frames and our contexts to that kind of knowledge base, then it becomes a bit of a challenge. And I don't think that is possible. One of the reasons why we work with children and youngsters is because a lot of the non-syllabus learning, a lot of the ambient learning, ambient attitudes that are picked up manifests these things. It could be traditional knowledge, एक लोरी से क्या सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, बचपन में कहानियों से क्या मिल रहा है, एक दूसरे के लोगों के बिहेवियर से क्या सीखने को मिल रहा है एक बच्चे को, एक यूथ को. So those things, it's important that we grow up with those things. They can't, everything can't be in textbooks. Everything can't be reduced to that. So that's one of the reasons why we have to work with the youngsters. That's one. Second, I think many of the youngsters are now, we are growing up in a world where the challenges are manifold. मतलब आसपास context थोड़ा सा अलग है. हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब climate change and ecology was always around, but it wasn't around as a threat or a reality, or the experiences were being faced. So children are growing up in this phase, and one of the things that's often eulogized is the fact that the current generation is very woke. There's a lot of feeling about the issues. There's a lot of inner need to do something about the issues. क्या सही है, क्या गलत है, क्या कैसे होना चाहिए. तो ये एहसास, this wokeness is there amongst the youth. But sometimes that is not backed by skills and know-how, knowledge, the conventional knowledge to do something about it. And that's where I think maybe that's the next paradigm what we do, where people who are, din mein jazba hai, there's a lot of woke, need to do something, but they don't have the skills to do something about it. That I'm gently seeing that beginning to lead to levels of frustration. So to me, those are the two things. I'm sure distinguished panelists before me have covered many other things, but these are the two things that I feel very strongly about and I wanted to bring in. So if you're really going to build a greener tomorrow, the need to work with the youth is because there are certain knowledge streams. It's very important that we create channels that those continue to be with the youth, and if they are with the youth or with anyone, then how do you look at their wokeness or the attitude that it generates? How does that get supported by skills? Otherwise, it will just lead to a lot of frustration and cynicism, which is a disaster in any generation. So Neha, I would love to hear what Vasanti ji also has to say on the subject and learn from her. Vasanti ji, if you can share your views, keeping in mind the role creative communication, because you come from that background, that can play. Thank you. Thank you, Mr. Roy, and all the distinguished panel and TERI, and the WSTC. I'm very happy to see so many children. अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोलूं, ठीक है, चलेगा? ओके. मैं आंध्रा से हूं, तो मैं बहुत थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, तो नहीं समझ आया तो हाथ उठा देना कि नहीं समझ आया. ठीक है. ओके. मैं to answer your question, actually, आज का जो सेशन सुन के I'm actually सारे आंसर्स इसी में थे. तो मैं अगर असिमिलेट करूं और रीट्रेट करूं दो चीजें, वो काफी है जो आप बोल रहे हैं उसमें करने को. पहला तो जो मुझे सुनाई दिया बच्चों से सुन के, जो बहुत खुशी हुई कि आपके जो इनिशिएटिव्स आप कर रहे हैं, आप ही नहीं, I must compliment Tata Steel, must compliment TERI. मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि ग्रीनर टुमारो के लिए बच्चे ही नहीं, सबको करना अपना काम. तो ये भार जो हम बच्चों पे डाल देते हैं ना कि खाली उन्हीं को करना है, ये गलत बात. हम सबको करना है अपना काम, सबको. हाँ, क्योंकि ये सेशन बच्चों के लिए है, तो हम विल फोकस ऑन दैट, राइट? है. बट उसमें जब एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली जो मैंने सुना आज, एक चीज जो मुझे समझ आ रही है कि नेचर एजुकेशन में और एजुकेशन नेचर में है, ऑलरेडी है. आपने बोला ना, ऑलरेडी है. उसको हम यूज और उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गया है हमारे, क्योंकि हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स यूज करे हैं, कंजम्पशन के, एडवर्टाइजिंग देख के खरीद लिया है, चाहे वो पसंद आए, वो हेल्दी हो नहीं हो, खा रहे हैं. अपने जो प्रथा है वो छोड़ दिए हैं. एक काफी नहीं है, मल्टीपल घर चाहिए. तो वो जो वैल्यूज और
कंजम्पशन और जो मार्केट और सोसाइटी बना रही है हमने, वो उसमें हम नहीं, उसके पास बड़ी कार है, मेरे पास छोटी कार कैसे है? तो ऑब्वियसली ये लड़ाई उसकी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम वापस जुड़ जाए प्रकृति से और नेचर से, और नेचर को क्लासरूम में लाए, और नेचर ही टीचर है, नेचर ही हमारा नॉलेज है, नेचर ही हमारा क्लासरूम है, नेचर ही हमारा स्कूल है, उस नजरिए से देखें, तो आई थिंक वी कैन रिजॉल्व लॉट ऑफ आवर इश्यूज। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग, हियरिंग दैट लिसनिंग आई एम डूइंग, इट्स आल्सो कमिंग नॉट ये इसी सेशन को लेकर ही नहीं बोल रही मैं। अब मेरी हिंदी अटक जाती कभी कभी, सॉरी। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, राइट? सॉरी। अभी मैंने मैं शोध करती हूँ, मैं रिसर्चर। तो एक रिसर्च किया यूनिसेफ के लिए, जिसमें हमने देखा कि यूथ को कैसे एंगेज किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन सर्टेनली देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन कि नहीं करना है, सो दैट्स व्हाई आई कॉम्प्लीमेंट द वर्क दैट यू गाइज आर डूइंग, एंड अमेजिंग वर्क देख रहे हैं, करना है। बट ऑल्सो नॉन फॉर्मल एंड अदर वर्क। ज्यादातर गाँव में या शहरों में हमें क्या दिखाया जाता है कि एनवायरमेंट एजुकेशन के नाम पे, जो आपने बताए, जो सारे आपने जो बताया, थोड़े क्रिएटिव इनिशिएटिव से, बट ज्यादातर लोग क्लीनिंग ड्राइव्स और प्लांटेशंस करते हैं। ये दो ही चीजें ज्यादातर, मतलब हमने एनवायरमेंट एजुकेशन कर लिया, ये हमने पार्टिसिपेट कर लिया। तो इसके अलावा और क्या, व्हाट इज मेजरली फाइंडिंग है, जो आई थिंक मिस्टर सौरभ जी ने भी बोला कि लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हमको लगता है ना कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। मैम ने बहुत अच्छे से समझाया कि कितने इंटर रिलेशनशिप्स हैं एक छोटी सी चीज को लेके। ये बच्चे जानते हैं, समझते हैं। आज के जमाने के बच्चे बहुत समझदार हैं, इनको जरूरत नहीं है समझाने की। ये लोग सब समझते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, कि अगर बटरफ्लाई वेदर कैसे चेंज होता है, कैसे हमारी खेती बाड़ी चेंज हो रही है, कैसे हमारी लाइवलीहुड चेंज हो रही है, कैसे मौसम चेंज हो रहे हैं। ये सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इनको ऑलरेडी मालूम है ना? मालूम है ना? मालूम है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है बोल रहे, पूछ रहे, यही पूछ रहे हो ना आप लोग? अगर हमें करना क्या है, हाँ, करना क्या है, बस ये बता दो। As simple as that. Isn't that true? Are we not here for action? I don't think we are here to hear more bhashan and gyan. I think we all know enough. Now it's time to do action. And I think clearly that. So when you ask me what is a greener future that we need to make, all of us have to do our own bit. And just एक बार नहीं करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, कंसिस्टेंटली करना है, तभी क्रिएटिव आर्ट्स बीच में आ जाते हैं। फिल्में, पॉपुलर मीडियम, एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने गाने या स्टोरीज या आपने हार्मनी वाला बताया, हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल करते हैं एनवायरमेंट पे एक्सक्लूसिवली। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग की कहानियां हम तक पहुंचे। क्योंकि आजकल कोई सुनने वाला होता नहीं है, पढ़ने वाला और भी नहीं है। तो देखते हैं, कम से कम देख लें, टीवी पे ही देख लें क्या आ रहा है और क्या समझ रहा है। इनकी कहानी हम तक पहुंचे, कैसे पहुंचेगी? मैं तो नहीं बुला पाऊंगी इनको, तो कम से कम यूट्यूब में जाके एक फिल्म देख सके, फिर चर्चा कर पाए। तो क्रिएटिव मीडिया इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें इंस्पायर करना है, कंटिन्यूड एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन। एक बार नहीं, मैंने एक बना लिया, हो गया मेरा काम, मेरा कंट्रीब्यूशन सफाई करके हो गया, मेरा ड्राइव नहीं है। कंसिस्टेंट कमिटमेंट, लाइफस्टाइल चेंज, बेबी स्टेप्स, जिन्हें सर ने बोला, बहुत अच्छा। आई थिंक बहुत बढ़िया है कि आप सब लोगों, हम सब लोगों ने बेबी स्टेप्स लिए, बट उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं, ये सब चैलेंज है हमारे लिए। थैंक यू सो मच वसंती जी। जैसे आपने कहा, डू योर ओन बिट, दैट इज एसेंशियल। सो कमिंग बैक टू सौरभ सर, I hope. Sir, I would request you if we can have one message from you for the entire Green School, the students who have joined us here in person and the students who have joined us through Zoom link and watching us live on YouTube. We can't hear you. Sir, you're muted. Sorry, can you hear me now? Yes, sir. Yeah, so I mean, Green School is our bacha, so my first message is that I love you. Okay. And no, I think the
often we look at this as a project, but I think it's brilliant how, first of all, the team has structured this to move from a set of schools to now having evolved schools, and how, there's a paying it forward element. तो बेबी स्टेप्स लिए गए थे पहले, और वो बेबी स्टेप्स जिन्होंने 10 बेबी स्टेप्स लिए हैं वो थोड़े से बड़े कदम ले रहे हैं, so it's brilliant. I think from a project perspective, I think it's happening really nicely. But credit to हम जिन टीचर्स को वर्कशॉप में मिलते हैं, जिन बच्चों को मैं नहीं मिल पाया हूँ, कि वो एक्चुअली पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्लीज कीप इट अप. जरूरी नहीं है कि हम हर चीज जो करें वो दुनिया के लिए मिसाल बने. अगर बन गया तो अच्छा, नहीं भी बना तो हमने अच्छा काम किया, और हमने हमारी नेकी की और दरिया को बचाया भी और फिर दरिया में डाला. So thank you. We're proud of Beat School, and proud of what it might mean for the world. Thank you so much, sir, for your kind words and motivation. So if I have to summarize the complete thematic track, so we heard Sasmita, where she talked about sustainable lifestyle should be our mantra for living. It should be not like we are going just crazy with the new world of fashion vista. Please think logically. Vinny talking about, please start taking baby steps, at least, because jo steps lega wahi aage badhega. Vasanti ji, do our own bit. The students, they share the initiatives, teachers, and Saurabh sir, that yes, we need to think about and have an attitude that we talk about planet sustainability, not our sustainability on the planet. So yes, with this thought, I would like to. I know you want to end, but मैं एक बिना बोले नहीं जा सकती यहाँ से. हम लोग यहाँ कमरे में बंद हैं. Only one message, वापस जाके अपने आप भी करना, बाकी सब में करना. Go back to nature, reconnect. नेचर से जितना टाइम आप उसमें स्पेंड करोगे और आप उससे सीखोगे, उतना ही हम लोग कुछ उसके लिए कर पाएंगे. So just reconnect with nature. That's the only message I have to all of you. Thank you. Yes, and just to conclude, because we have been talking about, the Green School has been actively working to raise awareness amongst all adolescents. We have the students from class 1 onwards till you are you leave the school. So about the global discourse and the environment, this encompasses discussion on climate change, intended nationally determined contributions, that is INDCs. We have talked about sustainable development goals, their interconnection with waste management, energy efficiency, water conservation, biodiversity, circular economy, and many more. And yes, as we go forward, we are going to keep taking the steps and increasing our bigger steps and reach out to the more and more audience. And we hope to look forward of our experienced schools converting into major evolved schools that can be a role model for the entire globe to follow. With this promise, thank you so much, everyone. Thank you so much, Saurabh sir, for joining us. Thank you, Vasanti ji. Thank you all the panelists who have been able to take out their time joining us, the students. Thank you everyone for being with us, and please do keep do follow us on the Facebook and spread the message across whatever we are doing, and help us spreading the message across. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, Neha. Thank you, Vasanti. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Pleasure. Thank you very much.